back to my channel. I'm Tanya. So before clicking on this video, you guys must have read the title of the video. And yes, we're gonna talk exactly about that. And before I take you to the exact point in the video where I tell you, what I personally feel that why women endure a bad relationship, let me take you through a journey of my personal perspective on this topic since I was a little girl to this age and how it has, sort of evolved and changed throughout these years. So let's start with when I was 7 years old. I think around 7 years old. Okay. So Kabhi Khushi Kabhi Gham movie had come out. So there was a very famous dialogue in the movie said by Amitabh Bachchan. Whenever his wife would try to say something to him or किसी चीज पर डिस्कस करना चाहती होगी, but he will have the final say and he would say, कह दिया तो बस कह दिया. Okay. So me, a 7 year old watching that, इतना मतलब how wrong that was, उसको ना समझते हुए I just think कि ठीक है, सारे पापा ऐसे ही होते हैं. The papas have the final say in everything. They decide everything in the house. उनकी permission के बिना कुछ हो नहीं सकता. So बहुत ही normal सा feel हुआ and I was sort of okay with it. ठीक है. Cut to that, let's go to when I was 11, 12 years old. ठीक है. So Balaji serials were a rage. Yes, they were in every possible channel that was available in India. And everyone used to watch it. छोटे से बड़े हर कोई बैठ के टीवी के सामने बालाजी serials. Okay. So, but what was funny and the most bizarre thing about that show, all those shows, was कि ठीक है, they used to show कि women are powerful. But what was bizarre actually was किस कॉन्टेक्स्ट में वुमेन पावरफुल थे. ठीक है. उनका कोई अपना पर्सनल जर्नी नहीं है, उनका कोई अपना पर्सनल स्टोरी नहीं हुआ करता था. उनको हमेशा दिखाया जाता था कि मतलब एक कुंवारी लड़की है एंड देन शी विल जस्ट गेट मैरिड एंड देन अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के फैमिली के हर प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हुए, जिसमें कि शी विल जस्ट गो ऑन डूइंग endless and unnecessary sacrifices. She will endure unnecessary things, and उन सब को navigate करते हुए अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए living a life, selfless life like that, that's the true power of a woman. So those shows used to convey that. So I used to think कि yeah, maybe दूसरों के लिए करना ही बस औरत का काम है. अपने लिए सोचना, I don't think it's that important. So from there, let me take you to the age of 15, 16. ठीक है. ये पर्सपेक्टिव कैरी करते हुए 15, 16 आई रीच, क्योंकि सीरियल्स का तो तब भी जोर था ना, आज भी वही पर्सपेक्टिव, वही कंटेंट के साथ वो आता है. सो नॉट अ ह्यूज चेंज, बट थिंग्स, थैंक गॉड, थिंग्स चेंज फॉर मी. सो ये पर्सपेक्टिव वाला जो मैं आपको बता रही हूँ टाइमलाइन, थोड़ा इससे हट के मैं आपको एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर मेरे बारे में देना चाहूँगी. ओके. सो आई वॉज अ डिज्नी किड. आई वॉज अ डाई हार्ड डिज्नी किड. वॉचिंग एनी शो जो भी डिज्नी में आता था, आई यूज्ड टू वॉच इट. सो मतलब ये बहुत ऑब्वियस है कि हैना मोंटाना, विजर्स ऑफ वेवरली प्लेस, आई यूज्ड टू लव देम. And these girls like Miley Cyrus and Selena Gomez, I used to love and adore them. ठीक है. I used to always think I wish I could be like them. And उनको अगर देखा जाए तो they were living, your dream life. They lived in America. They were pop stars. They were famous, and they were all very cute looking. They were all beautiful. So they were earning a lot of money. So, I used to think, wow, they have such a good life, and I wish I could have a life like that. But anyway, so okay, I gave you this little information piece. Okay, let's come back to the perspective wala timeline. Okay, so yes, Balaji serials के बाद what happened, अब मेरा perspective change हुआ around this age. ठीक है. इसे change हुआ and not due to any movie or show. Something happened in my own life. ठीक है. So we moved on to a new place and वहाँ पे हमारे एक neighbor थे. तो वहाँ पे नेबरहुड में एक आंटी हुआ करती थी. सो स्लोली वो मेरी मम्मी के साथ बहुत क्लोज हुई एंड आज तक वो लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. ओके. सो लेट मी टेल यू अबाउट हर. शी वॉज अ वेरी रिच लेडी. ठीक है. शी वॉज और नॉट मोर देन शी वॉज, her husband was a very rich man, I would say. So she was a daughter of a very rich man and then she was married off to this rich guy. उनके 2 बच्चे थे and from outside everything looked really well. और सब कुछ अच्छा ही लगता था. कुछ दिन के बाद when she got a little more closer with my mom, she actually confessed to her that her marriage was not what it looked outside. अंदर से it was a broken, loveless,
abusive and just a bad relationship. It was a bad marriage that she was going through. And बताती हूँ तब तक it was almost 22 years since she was married, and she was living this life. She was living this marriage. So it was very sad. वो कभी आके रोती थी, कभी बहुत सारे इंसिडेंट्स क्या बताती थी. सो एनीवे, ऑल थ्रू दैट, एक दिन मैंने मेरी मम्मी को कहा कि व्हाई इज शी रियली एंड्योरिंग ऑल दैट बुलशिट, व्हाई इज शी नॉट जस्ट गेटिंग डिवोर्स्ड एंड गेटिंग आउट ऑफ दैट मैरिज, व्हाई इज शी रियली एंड्योरिंग दैट. एंड देन माई मॉम वुड सेड इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि डिवोर्स इतना आसान नहीं है इंडिया में, स्पेशली डिवोर्सी वुमेन, सिंगल वुमेन, women who break up frequently because they can't stay with a man, वो उनका कुछ प्रॉब्लम है. सो इस तरह के पर्सपेक्टिव के लिए इट्स नॉट ईजी, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, what will she do if she gets divorced? क्योंकि she is not earning, she is not financially independent, so how is she going to survive? इस इंसिडेंट से, ये आंटी की स्टोरी से, मैंने एक नया पर्सपेक्टिव मेरे अंदर आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कल्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे इंडिया इज़ अ कंजर्वेटिव कंट्री. यहाँ डिवोर्स वगैरह, एज आई सेड, सिंगल वुमेन, ये सब इतना चलता नहीं है यहाँ पे. लोग इसको बहुत बुरी तरह से दे हैव अ वेरी बैड व्यू अबाउट ऑल ऑफ दिस. एंड सेकेंडली, कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री डोंट अर्न मनी, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन. ओके, सो टेकिंग दैट, लेट्स गो टू व्हेन आई वाज 23-24 years old. सो यही सोचते सोचते मैं उस एज तक पहुंची. एंड देन 2 things happened side by side. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी why I told you about the Disney thing. So let's talk about Selena Gomez. So around that age, जब मैं 23-24 की थी, I heard the news that Selena Gomez broke up with Justin Bieber. The relationship has come to an end. So ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं सही नहीं बना होगा, तो they broke it up. But that was not the thing. After the relationship, Selena Gomez इतना break down हो चुकी थी. She had just hit this low कि she had to seek for medical assistance, which isn't a joke. And she was so severely hurt, and I don't know what all happened to her. 2-3 years, I think 3 or more, maybe more. I don't know exactly क्या उनके साथ था, पर मेरे जितने भी जानने हैं कि काफ़ी years उनके life का इस trauma से उभरने में चला गया. So when she could have done so much work, and when she could have been busy and all, इस चीज़ से वो उभर सकती थी, she had just gone to such low, and that was so terrible to hear. ठीक है. So I thought to myself, what really happened to Selena Gomez? She's such a successful woman. उनको ज़रूरत क्या थी to endure such a bad relationship? She could have just easily come out of it, and her culture really permits that. उनका बहुत ही open culture है. So why was she really enduring that? I just couldn't understand. I was so puzzled with that. Secondly, और एक चीज़ मेरे अपने family में हुआ. So this lady in my family, she was before her marriage, she was earning, of course, and after her marriage, she was still continuing with her job. And हमको पता चला कि husband and wife दोनों equally earn करते हैं. Okay, they earn equally. So I thought to myself, wow, see, अब यहाँ तो कोई issue होने वाला नहीं है, क्योंकि she is independent and उसको अपने husband से काफ़ी अच्छा respect मिलता होगा, and that too, वो अपने घर के हर expenditure, big small whatever, she used to contribute equally. So that must be a good marriage. But no, it was not a good marriage. He was also very abusive. He was very disrespecting, demeaning man. And then, जैसे मैंने कहा, अब she's independent, so she should have gotten out of it, but still she thought that things will change, and still she continued enduring that relationship, enduring that really bad marriage. तो ये दोनों चीज़ मेरे जो previous perspective को एकदम shatter कर दिया. So अब मैं कहाँ आके पहुँचूँ? तो अब मैं क्या सोचूँ इस बारे में? Why are women really enduring a bad relationship? Isn't that a big question now? And बहुत सोचने के बाद I think I came up to an idea that women are doing that because women have never been allowed to step into their power and understand their self-worth. फर्स्ट मैंने सोचा इट वॉज लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, पर ऐसा नहीं होता है. सेल्फ वर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबके अंदर होता है, बट विद विमेन व्हाट हैपेंस, दे डोंट अंडरस्टैंड देयर सेल्फ वर्थ बिकॉज उनको उस तरह से उनको ब्रॉट अप किया जाता है.
उनको इतना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी लिटिल एज, उनके आइडियाज़ को डिसमिस कर दिया जाता है, उनके ड्रीम्स को डिसमिस कर दिया जाता है, उनको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता है। एंड एक ओवरऑली इस तरह का अपब्रिंगिंग रहता है कि व्हेन दे ग्रो अप देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ देम, बस क्या उनको बोला गया है, क्या सिखाया गया है, दे बिकम जस्ट दैट पर्सन. There is no trace of their own self in them. But society raises men to do all the wrong. ठीक है, उनको इस तरह से रेज करता है that they learn to do all the wrong and women to endure all the wrong. So ये जो प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में है, और हर सोसाइटी का मतलब हर घर है और हर घरों में ये सब चीज़ें होते हैं, हर घर के परवरिश में ये जो एक माइंडसेट और ये जो कल्चर एक इम्बाइब करके लड़के लड़की को बढ़ाया जाता है, that is the reason behind a bad relationship. That is the reason why are women enduring a bad relationship and men are really inflicting all of these pains to the women. ठीक है, सो इससे मैं आपको कोरिलेट करके बताती हूँ कि आप देखिए इस चीज़ को, आप समझिए व्हाई आई एम टेलिंग सोसाइटी. अगर आप एक मतलब क्लियर लाइन बनाएं कि व्हाट सोसाइटी वांट्स वुमेन टू बिकम एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स टू वुमेन इन अ बैड रिलेशनशिप, यू वुड फाइंड आई थिंक एवरीथिंग इज सिमिलर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वुमेन को वॉइसलेस बनाया जाता है. ठीक है, द सोसाइटी वांट्स वुमेन टू बी वॉइसलेस. दिस शुडंट बी अ पर्सन हु शुड हैव एनी ओपिनियन. तो देखिए, जब एक बैड रिलेशनशिप में आप होते हो, आप एक दैट हैपेंस एग्जैक्टली टू यू, यू जस्ट बिकम वॉइसलेस. देन सोसाइटीज वे ऑफ ट्रीटिंग वुमेन, दे वांट देम टू बी अ सप्रेस्ड जेंडर, एंड एक बैड रिलेशनशिप में भी आप सप्रेस होके रहते हो, राइट? एंड देन वल्नरेबल, ऑफ कोर्स इनडिसाइसिव. आई मीन कंक्लूजन में कि बस आपको पावरलेस बना दिया जाता है. ओके, सोसाइटी वांट्स वुमेन टू स्टे पावरलेस, एंड आप एक बैड रिलेशनशिप में क्या होते हो, यू जस्ट स्टे पावरलेस. सो आप देख पा रहे हो कि अ बैड रिलेशनशिप इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ अ मैन हैज बीन रेज्ड इन द सोसाइटी. ठीक है, एंड आप जो बन के उससे उभरते हो एज अ वुमन, व्हाट यू बिकम इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ हाउ वुमेन ट्रीट्स और व्यूज वुमेन. ओके, विच इज जस्ट remarkable, I would say. Yeah. Say, Tanya, what's the solution to this thing? Solution? It's very simple, but क्या हम ये कर सकते हैं? You know, it all at end of the day हमारे पे डिपेंड करता है. How we are raising our boys. हम उनको सही तरह से रेज कर रहे हैं कि नहीं, सेंसिटिवली रेज कर रहे हैं कि नहीं. ओके, एंड सेकेंडली, अपनी बेटियों को, रेजिंग आवर गर्ल्स, आर वी गिविंग देम दैट मच रिस्पेक्ट? क्या हम उनको उतना रिस्पेक्ट देते हैं, क्या हम उनको उतना आज़ादी देते हैं दैट दे कैन मेक चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स, दे कैन ट्रूली अंडरस्टैंड हु दे आर, दे कैन ट्रूली अंडरस्टैंड देयर ओन पावर, देयर ओन पोटेंशियल. ओके, बट स्टिल ऑल्सो कम्स अ थिंग कि हमेशा लड़कियों को क्यों बोला जाए, लड़कों को क्यों नहीं. बट इसको ना थोड़ा जेंडर से दूर रख के इसको ऐसा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता है. सो किसकी मम्मी किसकी अपने बेटे को ठीक से सिखाएगी, नहीं सिखाएगी, वी जस्ट कांट गेट इनटू दैट. हमको जब, बिकॉज व्हेन समथिंग विल हैपन, इट विल हैपन इन अस. इवन योर ओन मदर कांट हेल्प यू. ठीक है, सो यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर, स्टार्टिंग विद गर्ल्स. ओके, गर्ल्स, कभी अपने आप को किसी के सामने झुकाना मत. ओके, नेवर थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ. ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर वर्थ एंड मेक अ स्टैंड अबाउट इट. If someone tries to hurt it, someone tries to sort of put your worth into a shackle और उसको एकदम break down करने की कोशिश करती है, so you'll have to make a stand for yourself. So be strong. ठीक है, you are a girl and you have to be proud about it and be strong about it. And second point ये तो हो गया. second point एक चीज़ है जो कि एक personal tip है मेरा. okay, to all the mothers of the daughters. ठीक है, अगर आपकी बेटी इस एज में है when she is ready to get into a relationship, then आपका एक काफ़ी long relationship रहा होगा आपके husband के साथ in the marriage. So by that time आपको सही से पता होगा कि एक relationship में एक औरत को क्या चाहिए, what a woman wants in a relationship, what really makes her happy in a relationship. Share that with your daughter. And at the end, yeah, of course you can discuss about your relationship, but in the end just उनको बताइए कि you know what, love is there, of course, honey. Yes, love matters. But what matters the most at the end of the day is respect. Okay? अगर respect आपकी relationship में है and if your partner gives you respect, then you know love कहीं जाए, कहीं घूमने भी चला जाए, doesn't matter. आप मतलब that will be a very cordial and very loving relationship.
रिस्पेक्ट से लव और भी बढ़ेगा. इफ टाइम के साथ लव है कॉन्स्टेंटली एंड रिस्पेक्ट घटते जा रहा है, सो दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू अ डिच. लेट मी टेल यू. सो टीच योर डॉटर्स फ्रॉम द वेरी यंग कि, क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी शी विल गेट इन रिलेशनशिप, कभी ना कभी शी विल गेट मैरिड. सो टेल हर दैट अपने पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट पहली चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको ढूंढनी चाहिए. एंड इफ इट्स नॉट देयर, गेट द हेल आउट ऑफ देयर before anyone tries to harm your daughter, before anyone tries to hurt their sentiment or their worth. So that is all I wanted to say about this. And now let's थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि what happened to these three women जिनको मैंने mention किया in video में. First, that auntie, that neighbor, she's doing well. She's been separated for 7-8 years now, and she's doing so well for herself. She lives in Delhi now, and she has a job in this government organization. Both of her kids are settled, and she's traveling the world. She's solo traveling, and she's just having the time of her life. She's just happy, and I'm so happy and I'm so proud of her. Selena Gomez. Selena Gomez, after 3-4 years, she has come out with an album, and now she has a makeup line, I would say. She launched just recently. So she's also doing well. And this lady from my own family, last year she got separated from her husband, and she was earning before, and she's still earning, and she's having the time of her life too. She's also very happy, and everything's fine with this. So, what's the moral of this story, of these women's story? स्टोरी ये है कि हम जब भी रेस में आके खड़े हो जाएं, when we decide कि हमको रेस में जाना है, so we win. That is the true power of a woman. Oh God, Balaji, please. This is the true power of a woman. ठीक है? Whenever we think, हम कभी भी seriously हम जब भी ठान लेते हैं, we do it, okay? And we succeed and we achieve and we excel. That is the true power of women. But मेरा main intention क्या है इस वीडियो का? But still, that auntie lost 22 years of her life. Selena Gomez could have given more creative gifts to the world, more, awesome songs and stuff. But she lost 3-4 years of her life. This lady in my life, she also lost some of her few precious years that could have been, जिसमें कि वो when and एक ऐसा phase उनके life में जहाँ पे कि they were living like a zombie, like a walking dead. फीलिंग की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनका, बस उनको एक दिन मरना है. एंड दिस इज अ वेरी डार्क एंड अ कोल्ड फीलिंग दैट नो वन डिजर्व्स दिस. ठीक है, मैन वुमेन, नो वन डिजर्व्स दिस. सो बस मेरा पॉइंट इस वीडियो का है कि खुद अवेयर होइए, अपने बच्चों को अवेयर करिए कि कभी इस तरह के फेज से ना गुजरें. इवन इफ दे गेट इनटू अ बैड रिलेशनशिप, यू कैनॉट से, क्योंकि कोई रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में एक बैनर नहीं लिखा होता है कि दिस इज गोइंग टू टर्न बैड. स्टार्टिंग में सब सही रहता है, बट विद टाइम इट टर्न्स सावर. सो व्हाट हैपन्स कि बस इतना डाउनफॉल नहीं हो जाए, इतने नीचे आप नहीं गिर जाओ कि आप उससे ऊपर उभर ना पाओ. एंड लाइफ बहुत शॉर्ट है, इतना प्रेशियस मोमेंट आपका लाइफ का बर्बाद ना हो जाए, बिकॉज एवरी मोमेंट इज very precious. So that was, guys, all that I wanted to talk to you about, convey you. If you have watched till the end of this video, oh my God, thank you so much. And I hope to see you in the next video. Bye.